Hello students, today we will start examples of limit of a function of one variable. Beta first example first beta, prove by definition limit x tends to 3 x square minus 9 upon x minus 3 equal to 6. बेटा ये प्रूव करना है बाय डेफिनेशन. सो फर्स्ट बेटा कंपेयर विथ लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू l. ओके, fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9 x माइनस 3. ओके, l इक्वल टू 6 a इक्वल टू 3. सो बेटा डेफिनेशन की सी fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन. एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी फॉर 0 लेस देन x माइनस a. बेटा a कितना है 3 लेस देन डेल्टा. ओके, डेल्टा डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन. ओके बेटा, सो fx माइनस l x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 माइनस l. ओके, x minus 3 x plus 3 upon x minus 3 minus 6. We have x plus 3 minus 6 x minus 3 less than delta. Choose, because delta depend upon epsilon, so choose delta equal to epsilon. So fx minus l less than की आ गया बेटा epsilon. So a first example beta. Second example beta. Example 2. Let fx equal to 1 minus x upon 1 plus x. X lies between 0 and 1. Find the real number delta such that fx minus 1 by 3 less than 1 by 10 for x minus 1 by 2 less than delta. Beta we find value of delta. So beta upon fx 1 minus x upon 1 plus x, 0 less than x, the value lies between 0 and 1. Find a real number delta. We find delta. बेटा अपन की गिवन है fx minus 1 by 3. fx की वैल्यू कितनी है बेटा 1 minus x 1 plus x minus 1 by 3 बेटा. Okay, this one equal to 3 minus 3x minus 1 minus x upon 3 into 1 plus x. We have 2 minus 4x. Okay beta, upon 3 into 1 plus x. Beta 2 upon 3. Next 1 minus 2x upon 1 plus x the modulus, because a upon b the modulus equal to a modulus upon b modulus. Okay beta, then 2 by 3 we write 2x minus 1 upon x plus 1 the modulus. मैं बेटा चेंज कर लिया because 1 plus x is positive, because x lies between 0 and 1. Okay, so x lies between 0 and 1. 1 plus x 1 less than 1 plus करता बेटा इस. सो बेटा जड़ा 1 plus x है पॉजिटिव है ते 1 plus x की वैल्यू किस लाई कर दे बेटा 1 ते 2 दे विच. सो बेटा we find x minus 1 by 2. सो बेटा देखो बेटा this one is less than fx minus 1 by 10. बेटा मैं लिख रहा है बेटा देखो इस तरफ
बेटा fx minus 1 by 3 less than 1 by 10. बेटा this one equal to 2 by 3, 2x minus 1. बेटा clear है, 1 minus 2x because 2 minus 4 the modulus equal to 4 minus 2 the modulus. So we write this upon x plus 1 less than 1 by 10. So 2x बेटा अपन वैल्यू की नहीं चाहिए, x minus 1 by 2 less than 2 ना मल्टीप्लाई 2 ना डिवाइड बेटा, x minus 1 by 2 upon x plus 1 less than 1 by 10. X plus 1 is positive, so x minus 1 by 2 less than 3 by 40 into x plus 1. बेटा x plus 1 lies between 1 and 2, multiply by 3 by 40. So बेटा okay, then बेटा 3 by 40 less than, so इसकी वैल्यू है मिनिमम कितनी आ रही है बेटा 3 by 40. डेल्टा की इन द वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, so we choose x minus 1 by 3 less than 3 by 40. So delta की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 by 40. So बेटा we find value of delta. Repeat कर रहे हैं बेटा अपन गिवन है fx minus 1 by 3 less than 1 by 10 for x minus 1 by 3 less than delta. We find real value of delta. Delta you know very small positive quantity. fx equal to fx minus 1 by 3. We solve this modulus different beta 1 plus x is greater than 0, so modulus x plus 1 equal to x plus 1. Okay beta this one is less than 1 by 10, so this one equal to 2 by 3 2x minus 1 upon x plus 1 less than 1 by 10. We find x minus 1 by 2, we multiply by 2 and divide. Okay, x minus 1 by 2 less than 3 by 40 into x plus 1. Beta x plus 1 lies between 1 and 2. We multiply by 3 by 40. So we have delta is smaller value. We choose 3 by 40. So beta delta की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 by 40. Example third बेटा, बेटा example third, if fx equal to x cube, if x less than equal to 2 and x square plus 4 x greater than 2, show fx minus 8 less than epsilon 4 0 less than x minus 2 less than epsilon upon 13 and epsilon lies between 0 and 1. So beta case first, we take x less than equal to 2. Okay, then fx minus 8, fx x cube minus 8 है ना बेटा, 8 को गिलेगा 2 the cube. Okay, then we have x minus 2 the cube. बेटा देखो a cube minus a minus b the whole cube, a cube minus b cube. Okay, minus 3ab into a minus b. So we have x cube minus 8 minus 6x square plus 12x. So x cube minus 8 बेटा और वैल्यू कितनी आएगी minus 6x square आएगी ना, और वैल्यू बेटा minus 6x square. We take plus 6x square plus 12x, so we take minus 12x. क्लियर है बेटा, अपने वैल्यू की आ जाएगी बेटा this cancel this cancel this, we have this. So बेटा मैं इसमें क्यों चेंज कर रहा है बेटा, x minus 2 ਦੇ ਵਿੱਚ क्यों लेके आ रहा है, because अपन गिवन है x minus 2 is less than epsilon upon 13. ये अपन गिवन है बेटा, so we change all values in x minus 2. So बेटा x minus 2 the cube plus 6 x square minus 2. Okay, 6 2x. Okay बेटा x square minus 2x, बेटा 6 कॉमन कर दें.
then x minus 2 the cube plus 6. We write x minus 2 the square, x square, x minus 2 the square, beta x square plus 4 minus 4x. So we have x square plus 4, x square तो अपनी requirement है बेटा, plus 4. So we take minus 4 minus 4x plus 4x minus 2x. So we have 2x. Okay beta, this one. So beta this one equal to x minus 2 the cube plus 6, x minus 2 the square plus 6, 2 कॉमन कर लो बेटा, 12 x minus 2. ओके बेटा, देखो ऑल टर्म चेंज टू किस चेंज करते हैं बेटा मैंने x minus 2. सो बेटा बाय ट्रायंगुलर इनक्वालिटी वी नो दैट this one is less than a plus b plus c the modulus is always less than a modulus plus b modulus plus c modulus. So this one is less than equal to x minus 2 the cube plus 6 x minus 2 the square plus 12 x minus 2. Okay, because a plus b plus c the modulus is always less than equal to a modulus b modulus plus c modulus. Beta also we know that beta z the power n the modulus equal to modulus z the power n. So we write this one equal to x minus 2 the whole cube plus 6 x minus 2 the whole square plus 12 x minus 2. बेटा x minus 2 is less than epsilon cube upon 13 the cube plus 6 epsilon square upon 13 the square 12 epsilon upon 13. Okay beta, from this beta epsilon lies between 0 and 1, so epsilon square be less than epsilon and epsilon cube be less than epsilon. Okay beta, because epsilon बेटा पूरे epsilon less than 1 epsilon ਨਾਲ मल्टीप्लाई करता है, epsilon स्केयर less than epsilon. वैसे देखो epsilon ਦੀ वैल्यू 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੇ तो always this one is less than. Okay बेटा, so this one less than, देखो बेटा epsilon स्केयर less than epsilon, फिर epsilon ਨਾਲ मल्टीप्लाई करता है बेटा epsilon स्केयर less than epsilon. So this one less than epsilon upon 13 the cube, 6 epsilon upon 13 the square, 12 epsilon upon 13. बेटा एप्सिलॉन कॉमन निकल गया, सो एलसीएम रखेंगे बेटा इसकी वैल्यू आ गई आपको लगे 2107/2197 एप्सिलॉन. इसमें सॉल्व करके बेटा ये आ गया 2107/2197 किस तो लेस है बेटा 1 तो, सो दिस वन इज लेस देन एप्सिलॉन. बेटा दिस वन इज लेस देन 1, बोथ साइड एप्सिलॉन मल्टीप्लाई, सो दिस वन इज लेस देन एप्सिलॉन. केस सेकंड. ओके, फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा. केस सेकंड, x is greater than 2, then fx minus 8. We have fx कितना बेटा x square plus 4 minus 8, x square minus 4. Okay, we have x minus 2 the whole square, x square plus 4 minus 4 minus 8 minus 4x plus 4x. ओके बेटा, जो इसको ऊपर कराएंगे बेटा प्लस माइनस करता, दिस वन इक्वल टू x minus 2 the square plus 4x minus 2. So this one equal to triangular inequality बेटा, x minus 2 the square plus 4x minus 2. This one is less than epsilon square upon 169 plus 4 epsilon upon 30. We have this value 53 upon 16. Beta epsilon square is less than epsilon. Epsilon upon 169, 4 epsilon upon 13. We have 53 upon 169 LCM. This one is a less than 1. So beta यही अपने की करना सी proof. This one is example 3rd. Example 4 बेटा,
Beta, example number 4. By definition, prove that limit x tends to c, x minus c upon into sine 1 upon x minus c equal to 0. Beta, compare with limit x tends to c, fx equal to L. Okay. So beta, fx is equal to x minus c sine 1 upon x minus c, L equal to 0. So fx minus L less than epsilon for 0 less than x minus c, the modulus less than delta. Okay beta. Then fx minus L, this one equal to x minus c sine 1 upon x minus c. This one equal to x minus c the modulus sine 1 upon x minus c the modulus, because a b the modulus product the beta a modulus b modulus. Okay beta, sin theta the maximum value कितनी होती है बेटा 1 less than equal to x minus c, because is the maximum value कितनी होती है बेटा sin theta the maximum value less than equal to 1. Okay, so beta x minus c किस तो लेस है बेटा डेल्टा, choose delta equal to epsilon. Okay beta, next example number 5. Let fx equal to 2 plus x, x is rational, 2.5 minus x if x is irrational. Prove that limit x tends to 0.25 fx equal to 2.25. बेटा प्रूव करना है मैंने इसके विच. सो बेटा fx माइनस L, L कितना बेटा 2.25 less than epsilon for 0 less than x minus 0.25. Okay, 0.25 less than delta. Okay बेटा, so fx minus 2.25 बेटा. Case first we take x is rational. So fx minus 2.25, fx की वैल्यू कितनी है बेटा, जो x रैशनल है, fx इक्वल टू 2.x minus 2.25. So we have x minus 0.25. Okay, this one is less than delta. Choose delta equal to epsilon. Case second, x is irrational. Okay, fx minus 2.25, 2.5 minus x minus 2.25. So we have 0.25 minus x. We write x minus 0.25. In both case, first and second. Okay, these value same आ रहे बेटा, देखो x minus 0.25, x minus 0.25. Combine both case. We have fx minus 2.25 equal to x minus 0.25. This one is a less than delta. Choose delta equal to epsilon. बेटा इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ मैं एग्जांपल्स ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन ट्राई करी है बेटा, वो है कि एग्जांपल जिस च लिमिट एग्जिस्ट कर दी है. देन नेक्स्ट माय नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस एग्जांपल्स ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट. थैंक यू वेरी मच.